Hi, hello, namaste, my dear students. How are you all? So, I hope everybody is doing well and you're preparing well for your examinations. So, yesterday in the last class, we have seen some of the important examples on application of derivatives, that is, finding the maximum and minimum value as well as finding the interval in which it has a maximum or minimum value. So in the same chapter we have some different kinds of problems also. We'll see and we'll discuss them today. Okay, so regarding if a volume or a surface area or an edge or a radius of a cube or a square, circle or a sphere is given, and we want to find either area or a volume or a surface area and so on. So depends on these, we'll see some of the very important examples. Okay, so please watch this video till the end so that you can clear your doubts and can write your exam with confidently. Okay, let us see one important example. Okay, so the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter square per second. So how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? So read the question step by step and we'll write the data. Okay, first volume is given of a cube. So object is cube. So volume of a cube is increasing. It is increasing at the rate of 9 centimeter square per second. At the rate or rate of change of, if this word comes, then we are measuring the volume with respect to another quantity. Another quantity, how to know that is depends on the given data. So he has given the rate of change of volume 9 centimeter square, you can see per second, which means the volume is changing with respect to second, in a sense changing with respect to time. If I say if A is the area and area is changing with respect to time, so this is written as dA by dt. So d by dt is rate of change of what it is changing, area is changing. So we write it as dA by dt. If radius is changing with respect to time, we write it as dr by dt. And here it is dv by dt he has given, isn't it? Okay. So how fast is the surface area? Second word he has given is surface area of, again what object? Cube only. Increasing when the length of an edge is 10 centimeter. When edge is 10 centimeter, how fast is the surface area increasing? Let us see. Let us take V, S and X be the volume, surface area and edge, or you can say side of cube. So V is our volume, S is surface area and X is edge, isn't it? Okay, let us see. So what is given, just write it down here. dV by dt he has given it as 9 centimeter square per second. Volume increasing at a rate, this one, rate in sense dV by dt. Okay, next how fast is the surface area increasing? How fast in the sense ds by dt, again question mark. When a length is 10 centimeter, what we have taken? Edges x, edges x. Okay, now we need to find first what is the volume. So volume of cube is equals to x cube, it is. X is edge, so the formula is edge cube, edge into edge into edge. So to find dV by dt, differentiate with respect to time. So this is dV by dt. So this will be x cube, differentiation is 3x square into dx by dt. Why dx by dt? Chain rule will be applied here. But why? We are differentiating with respect to t and the variable is x. Differentiating t, variable is x. That's it. That is what we differentiate x one more time, dx by dt. Okay. Now substitute the values. dy by dt is 9. 9 is equals to 3 as it is. Again x value is what he has given, 10. So I'll let it as 10, its square as it is, into dx by dt. Okay, so can I cancel 3 ones, 3 3s are 9, isn't it? Right. Now here it is 3,
10 square, you bring this into denominator. What it becomes? 100 is equals to dx by dt. Are you getting this? Okay. So therefore, dx by dt, otherwise I'll write there. Therefore, dx by dt is 0.003 centimeter. Why? You can take two zeros in the numerator. 3 by 100 is 0.003. You know already this, studied in your high schools. Okay. Now he is asking to find the surface area. Let us find surface area. S is equals to 6x square, which means 6 times of edge into edge, that is edge square. So let us differentiate this also with respect to time. So again 6 as it is, x square differentiation is 2x into x differentiation is dx by dt. Again chain rule as of the previous case, because t is one variable, x is another variable. Chain rule will be applied. Okay. Now ds by dt is to be found. 6 to the 12. X, what you have? 10. X 10. This x has 10. And dx by dt is here. 0.003. So what it will be? It will be 12 as it is. If you multiply 10 into inside, it becomes 0.03. 1 0 will be eliminated if you multiply by 10. 12 3 is a 36. So 12 3 is a 36. And just apply the point after one decimal. So this is your ds by dt centimeter square per second. And this is what he has asked. Change of or increasing surface when the edge is 10 centimeter. Isn't it easy? Remember the two formulas: volume of a cube, surface area of a cube. We'll write it as in clear words. Surface area of cube is, it becomes very easy. Okay. So these formulas you need to remember. These two formulas to be remembered. Okay. Just look into it once. Okay, my dear students, we'll see one more similar kind of example. That is, you can see the radius of air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing? When r is 1 centimeter. Again, he is talking about bubble. Bubble is nothing but sphere. Bubble will be in the form of sphere only. And he is talking about two things. One is radius, another one is volume. Let us see step by step. The radius of the bubble is increasing at the rate. Again, you can observe he has given at the changing at the rate, whether it may be increasing or decreasing. If the word comes rate of change of or the rate of increasing, decreasing, compulsory it is a d by dt. Why t? Again, he has given the data with respect to time, that is second. Okay. R is the radius instance, he has given dr by dt here. Let us see. So what rate is the volume of the bubble? What rate is the volume means V is the volume. At what rate instance? Again dV by dt we need to find out when the radius is 1 centimeter. This is very simple. Let us see. Okay. So let R be the radius and V be the volume of the bubble. So bubble in the sense sphere. Bubble will be on the form of sphere only. Okay, let's see. Now write down the given things. The rate of change of air bubble in the sense dr by dt is given, that is 0.5 centimeter per second. This is one thing is given. And what is asking, at what rate volume of the bubble is increasing, that is
dv by dt question mark at r is equals to 1 centimeter. Okay. Now you should know what is the volume of the bubble or volume of the sphere. That is, volume of sphere is, sphere in the sense we'll write it as bubble only here. Bubble is V is equals to 4 by 3 pi r cube it is. You know this formula already, you studied in class 9 and 10. So surface area and volume chapter. Volume of a bubble is nothing but sphere 4 by 3 pi r cube. Now what we need? dv by dt we need. Let us differentiate v with respect to t. Differentiate with respect to t. Okay. So what we get? dv by dt. So you can see 4 pi by 3 is constant. 4 pi by 3 is constant. Keep it as it is. Only the variable is r cube. R cube is exactly like a x cube, and t and r are totally different terms. So r cube differentiation will be 3r square. Like x cube differentiation is 3x square, and it is not t. So differentiate one more with respect to term. So it will be dr by dt. So how we have differentiated in the previous problem dx by dt. Here it is r, and we'll write it as dr by dt. Okay. Now let us simplify this. What you get? Okay. Can we cancel 3 with 3? The remaining term is 4 pi is the constant. R square. R is how much? 1 centimeter. I'll let it as 1 square into dr by dt. dr by dt is how much? dr by dt is 0.5. I'm substituting the data here. So this is 4 pi, 1 square will be 1. And can I write 0.5 as 1 by 2? Because 0.5 is a half. Half is 1 by 2. Because 2 1s are 2 2s, we can get cancels. So this is nothing but what? 2 pi. Therefore, dv by dt is equals to 2 pi. What will be the unit for this? Yes, we have a volume. Volume is a 3-dimensional quantity. So it will be centimeter cube per second. Isn't it easy? Just one formula, volume of a sphere. It's like a bubble. Differentiate it, substitute the data and simplify. Just look into it. Okay, my dear students, let us see some more different kinds of examples in this chapter only. Let us see. Find the positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is a minimum value. Okay, let us see. How to find such kind of problem is also very important. This is, you can say, third kind of problem. Maximum, minimum, and the previous one is surface area, volume, radius, etc. And this is two numbers, and find the two numbers, whether the sum of two numbers is even or product of two numbers is even. Let us see. So two positive numbers x and y. Let x and y are two numbers. That is what he has given. So what is given? X plus y is equals to 60 he is given. So again I can take this as x equals to 60 minus y. I'll take this as equation number 1. Another one also given, xy cube is minimum. Let us take, so x and y are products, so I'll take p as x y. Isn't it? Just you can take anything. So he has given product of two numbers, I have taken it as p. Now what we do is, we'll substitute x value here. That is why two equations is given using one into another one. So I'll use x here. So x is 60 minus y. Here it is 60 minus y into y cube. Isn't it easy? Using this equation here. So x value is 60 minus y from equation 1 and y cube as it is. Now multiply inside the bracket. 60 into y cube is 60 y cube minus y into y cube is y raised to 4. This is your p.
राइट? इज इट इजी? सो इजी है ये. जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मल्टीप्लाई करो. अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, विथ रेस्पेक्ट टू y. क्यों विथ रेस्पेक्ट टू y? बिकॉज द वेरिएबल्स आर हियर y. If the variables are x, we would have differentiated with respect to x, and if the variables are y, so we are differentiating with respect to x, isn't it? Let us say. So what it becomes? P becomes dp by dy, simply. 60 again वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे तो एज इट इज रखो. ये दोनों दोस्त है. अगर दोस्त के साथ दोस्त है बोले तो दोस्त को एज इट इज रखो, उसको मरने मत दो. समझ में आ रहा है? अगर वेरिएबल के साथ एक दोस्त है, दोस्त को मरने मत दो, उसको एज इट इज रखो, साथ में रखो. सो वाई क्यूब क्या होगा? यस, 3y². यहाँ पे चेन रूल नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? डिफरेंशिएटिंग फंक्शन भी क्या है? y है. विथ रेस्पेक्ट टू भी y ही कर रहे हैं. दोनों वेरिएबल सेम है. जब दोनों वेरिएबल सेम है तो चेन रूल नहीं आएगा. ये आप डिफरेंस कंपेयर करके पढ़ना सीखिए. ठीक है? माइनस y⁴ 4y³. दिस इज एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? राइट. अब ये क्या होगा? 6 3 is 18, so 180y² minus 4y³. So this is our dp by dy. इसको और एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए. क्यों करना है वो देखेंगे हम लोग. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो अगेन डिफरेंशिएट. इक्वेशन 1 को ही डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वेशन 2. ठीक है? इक्वेशन 2 को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. dp by dy क्या होगा? d²p by dy². अब 180 दोस्त के साथ, वेरिएबल के साथ दोस्त है तो 180 को एज इट इज रखो. माइनस बोल रहा हूँ. देखो, y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y होगा. माइनस 4 दोस्त को एज इट इज रखो. y³ का डिफरेंशिएशन 3y². इजी है? समझ में आ रहा है? अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो. 180 इंटू 2 360y माइनस 4 3 is 12y². इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा. इसमें y का वैल्यू कौन सा भी सब्स्टिट्यूट करो, आइदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, आपको ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू आएगा. क्यों? यहाँ पे y वैल्यू 1 2 3 क्या भी सब्स्टिट्यूट करो. ओके. अब यहाँ पे -12 है ना, सो -12 y का स्क्वायर है. y का स्क्वायर नेगेटिव डाले तो भी पॉजिटिव ही आएगा. सो वैल्यू विल बी मैक्सिमम. सो व्हेन मैक्सिमम such that we will have dp by dy should be is equal to 0. We'll have a minimum value compulsory. When it is greater than 0, we'll have a minimum value. That is what he has given. Okay. एक बार लिखते बोलो तो लिखो, नहीं तो चलेगा. Okay. Now dp by dy कहाँ पे है? इक्वेशन 2. So इक्वेशन 2 कैसा होगा? उसका वैल्यू 0 ले लीजिए. You take this as 0. So this becomes 180y² minus 4y³ is equals to 0. Here it is. 180y² minus 4y³ as it is, and this dp by dy is 0. Now you need to simplify this. You will get the value of y. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 4y² कॉमन ले लीजिए. अगर 180/4 करेंगे, 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 carry 4 5 जा 20. So it will get 45 minus y is equal to 0. Okay. Now ये दोनों सेपरेटली इक्वल करो, बट क्या होगा? 4y² नॉट इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एंड 45 माइनस y इज इक्वल टू 0. देखो, दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं. ओके. लेकिन ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हमारे को क्या दिया? सो ये x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स. 2 पॉजिटिव नंबर्स है और उनका सम 60 है. उनका सम क्या है? 60 है. अगर 60 सम है तो y² और y का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू कैन हैव 45 माइनस y इज इक्वल टू 0. देयरफॉर
y is equals to 45. एक आंसर आया देखो. He has asked to find the two positive numbers. So y is obtained. So इसको 0 नहीं ले सकते क्योंकि y का वैल्यू हमारे को चाहिए ही चाहिए. इसके लिए दिस इज नॉट इक्वल टू. जस्ट सिंप्लीफाई सेकेंड वन. अब हमारा x वैल्यू कहाँ पे है? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. x इक्वल टू क्या है? 60 माइनस वाई. 60 माइनस वाई 60 माइनस 45. सो ये क्या होगा? 15. Therefore x equals to 15 and y is equals to 45 are two पॉजिटिव नंबर्स. अब ये आंसर करेक्ट है या गलत है कैसा देखेंगे? यहाँ पे दिए सो है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू ऐड करो, उसका आंसर 60 आना चाहिए हमारे को. देखो 15 प्लस 45 60, विच मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट. ओके, देखिए एक बार. चलिए दोस्तों, और एक एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम के जैसा ही थोड़ा अलग है, उसको देखेंगे वो कैसा डिफरेंशिएट और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस सी. फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. So he hasn't mentioned any numbers. Sum दिए सो है and उसके sum of squares दिए सो है. So we need to choose any two numbers. Let us see one by one. Find the positive numbers. There are two numbers. Let us take x and y are two numbers. ठीक है, दो नंबर x एंड y है. अब क्या दिया सर? whose sum is 15. सम मतलब एडिशन. किन किन का एडिशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. सो दिस इज गिवन. ये गिवन है, ये गिवन है ना. इसको कैसा ले सकते हैं? प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा. y इज इक्वल टू, कैन आई टेक इट एज 15 माइनस x, और यू कैन टेक x इक्वल टू 15 माइनस y. यू कैन टेक एनीथिंग either in terms of x or in terms of y, doesn't matter. अब नंबर्स क्या हो गए? x और y का वैल्यू क्या हुआ? 15 माइनस. यस यस. नाउ टू नंबर्स आर x एंड 15 माइनस x. क्यों? x एंड y है ना, x एज इट इज है, y का वैल्यू क्या है? सो है 15 माइनस x. सो दीज आर द टू नंबर्स. नाउ अब आगे का पढ़िए क्या होगा? एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम. सम मतलब ऐड, स्क्वायर्स विथ ऐड, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर करके ऐड करो. किनको? हुज का मतलब क्या होगा? ये नंबर्स का. नंबर्स कौन सा है? देखो ये दो नंबर्स है, इनका स्क्वायर करो और इनको सम करो, मतलब ऐड करो. उनका वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा. ये पूछ रहे हो. ओके, लेट अस सी. Sum of whose numbers is minimum. इसका मतलब क्या हुआ? I'll take it as sum as yes. स्क्वायर मतलब स्क्वायर करो किसको? x स्क्वायर को और 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर को. दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर दिया. अब क्या कर रहे हैं? सम. सम मतलब ऐड करो. सिंपल. दोनों नंबर को स्क्वायर करो और उनको ऐड करो. इट इज वेरी सिंपल. उसका नाम क्या दिया? सो है यस. यू कैन टेक इट एज पी क्यू आर एस टी, वॉट एवर इट में भी. सो अब क्या करो? डिफरेंशिएट करो. सिंप्लीफिकेशन कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे? यहाँ पे x करेंगे. प्रीवियस प्रॉब्लम में वेरिएबल y था, इसलिए y. इस प्रॉब्लम में वेरिएबल कौन सा है? देखो x विथ रेस्पेक्ट x. दिस इज वेरी सिंपल. सो ये क्या होगा? ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, प्लस इसमें देखो ये भी एक्स स्क्वायर ही होगा. ये ब्रैकेट को आप x समझना चाहिए. चेन रूल विल बी applicable here. So I have given one important formula, that is differentiation of x raised to n is n into x raised to n minus 1. इसका जनरल फॉर्म मैंने क्या दिया था तुम लोगों को?
एनी फंक्शन टू द पावर ऑफ नंबर, बेस में कौन सा भी फंक्शन रहने दो और उसका पावर एनी नंबर है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। x उसको मानेंगे, x मान के डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको x मानेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x इज 15 minus x according to our problem. x square is 2x, but it is not actually x. Differentiate one more time. So 15 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। चेन रूल, जिसको x समझेंगे उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। हमने इसको x समझा, इसको और एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 15। ये तो दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। क्यों? इसके साथ वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये दिस इज नॉट अ फ्रेंड बिकॉज देर इज नो वेरिएबल, दिस इज एन एनिमी। सो एनिमी को क्या करना चाहिए? यस, डिफरेंशिएशन यूज करके किल करो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 15 इज 0. Pure constant is your enemy when you are differentiating. Okay, and x becomes 1, and what it becomes? 2x minus 1 comes here. This minus 1 into 2 is minus 2. अब इसको simplification करो, 2x as it is minus 30 plus 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई करो। ओके, minus 2 into 15 is minus 30, minus minus plus 2x। अब क्या होगा हमारे बच्चे? 2x plus 2x 4x minus 30. दिस इज योर ds by dx. दिस इज इक्वेशन 2। समझिए, इक्वेशन 2 ही समझेंगे, इसको 1 समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक बार और एक बार देखो, पिछला प्रॉब्लम कैसा करे वैसा ही है, थोड़ा अलग रहता है। सारे के सारे एलिमेंट सेम ही रहेंगे। दो नंबर एक्स एंड वाई लेसो है, एक डीएसओ है, एक्स प्लस वाई 15 डीएसओ है। अब इससे क्या ले सकते हैं हम? y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स ले सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नया नंबर्स क्या होंगे? x एज इट इज होगा, y का वैल्यू क्या होगा? 15 माइनस एक्स इज योर न्यू नंबर नाउ, x एंड y। अब इनका स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफिकेशन करें, और एक बार डिफरेंशिएशन करो इसको, पिछले प्रॉब्लम की जैसा है। क्यों डिफरेंशिएशन करना सेकेंड टाइम में? इसको मिनिमम वैल्यू आता है या मैक्सिमम वैल्यू आता है देखने के लिए। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स एस बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरा इसको ही। सो 4 एज इट इज, अगर यहाँ पे दोस्त है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, दोस्त को एज इट इज रखो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, ये तो दुश्मन है, क्यों? देयर इज नो वेरिएबल, इजंट इट? 0। सो ये क्या होगा? 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4 तो प्लस 4 है, पॉजिटिव है। सो वी हैव minimum value such that ds by dx is 0। अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम वैल्यू आएगा, लेस देन रहे तो मैक्सिमम। इसीलिए हम सेकंड और डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं। अब ds by dx कहाँ पे है? देखो इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा? 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? ds by dx का वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हियर इट इज। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करो आराम से, क्या होगा? अगर 4x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 30 by 4, इसको डिफरेंशिएशन करो। 2 15 जा 2 2 जा, देयरफॉर योर x वैल्यू विल बी 15 by 2। x का वैल्यू 15 by 2 आया हमारे को। और कौन सा होना है? y इक्वेशन 1 में है, देखो। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू क्या होगा? 15 एज इट इज माइनस x है, देखो x का वैल्यू ऑलरेडी 15 by 2 है। अब ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप लोग, कैसे करेंगे? 2 एलसीएम आएगा, ये 15 इंटू 2 30 माइनस 15, फिर से ये क्या होगा? 15 by 2 ओनली, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 by 2। देयरफॉर x इज 15 by 2 एंड y इज ऑल्सो 15 by 2। देख सकते हैं कितना आसान है।
स्टेटमेंट को समझो, उसके अकॉर्डिंगली गिवन लिखो और उसके अकॉर्डिंगली वो गिवन वैल्यूज फॉर्मूला में और इक्वेशंस में यूज करते जाओ, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, इजी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीज सेकेंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर 3 मार्क्स वेरी इजीली। बहुत आसान है, आप लोग एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपको आ जाएगा। एक नहीं तो 2 नहीं तो 3 बार वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन।